so that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place amongst the nations of the world. Preamble to the Constitution, 1973. In my own short life of 50 years so far, I have sadly witnessed this country being labeled, first as a less developed country, then as a failed state, and now as a humiliated state in the eyes of the world. This state of humiliation is undeniable when the government of Afghanistan lectures the Pakistani state and its people on political stability, as they recently did through an official statement. One of the central ideological bases for the rise of modern China has been their national determination never to repeat the century of humiliation between 1839 and 1949, when they were subjugated by foreign powers due to their own national weakness and internal conflicts. Primarily, our humiliation is an elite failure because the military, political, judicial, bureaucratic, capitalistic, religious and media elites of this country determine our destiny by controlling the structures of power, money and the ideological/cultural narrative. However, every country has an elite which wants power to be concentrated in their hands alone, but they still don't want to be perceived globally as a humiliated elite. The problem with our elite is that while they display short-term tactical brilliance in still being able to sustain their rule, they have no strategic sense or greater ambition to sustain and increase their elite power through the necessary national reforms that could lead them to being perceived globally as a respectable ruling elite. To achieve national rejuvenation, the conflict in the country must be understood. One of the key steps on any path to national rejuvenation is to understand the primary contemporary conflict in Pakistan. This is the battle between the people through politicians, the sword/coercive power through the military establishment and the pen/constitutional power through the judges. People. The anger of May 9 was a culmination of a historical process and Imran Khan is a mere conduit of this expression. The democratic revolution which started in 1970 through the brave struggles of both the people of East Pakistan and West Pakistan is reaching a critical moment. The long-term effect and expression of this democratic revolution can be seen in three developments. Firstly, unlike Generals Ayub and Yahya, Generals Zia and Musharraf were not able to abrogate/repeal the constitution, which is the ultimate aspirational expression of the people. They merely suspended the constitution. Thus, even the establishment, paradoxically, fears and understands the importance of the constitution. Secondly, despite murders, disqualifications, exiles and state repression, the political elite and workers remain alive and kicking, fighting as well as collaborating with the establishment. Thirdly, as Asim Sajjad in his book The Struggle for Hegemony in Pakistan prophetically explained, the experience of PTI can be extrapolated to many parallel post-colonial contexts where a youthful and digitally connected demographic imbued with middle-class aspiration forms the vocal voice base of a reactionary coalition that claims to break the monopoly of dominant elites. Pakistan is experiencing a second middle-class mobilization, first, as part of the lawyers' movement in 2007 and now as a part of Imran Khan's mobilization. The genie of the people can no longer be ignored or silenced by the shut-up call given by military courts or a return to family/dynastic politics. Sword, despite desires to the contrary, there has been no martial law or direct military rule in this country for the last 16 years, our longest period of formal constitutional rule. The days of the establishment's monopoly over power, not domination, are over. Direct military takeovers can be tried again, but as in East Pakistan, this might spell the end of establishment domination. On the other hand, the sustained mass mobilization and revolutionary politics needed to fulfill the liberal dream of civilian supremacy and deep constitutional democracy is not in sight. Thus, what we will continue to have is a strong military imprint on our constitutional democracy for some years, but without the establishment's monopoly, i.e., various shades of hybrid governance. But the role of the military establishment and its intelligence agencies is also critical for the future of this country for three reasons. Firstly, no force except the military can ensure monopoly over violence of the Pakistani state. Civil war and chaos are the result of a weak military. Secondly, no substantive reforms are possible without the backing of the establishment.
Thirdly, only a strong and professional armed forces can safeguard us against the two threats on our borders: the export of Islamist extremism from Afghanistan and the rising domination of a Hindutva India in this region. We need the sword, but without it trying to subjugate the people or the constitution. Pen, whether judges desire it or not, or whether they consider themselves up to the task or not, it is the superior judiciary which will play a critical role in checking the abuse by both the people and the sword. The superior judiciary stands as the constitutional guarantor against both majoritarian people's politics by protecting the weak religious, social, and economic groups as well as oppositional political forces. Also, it stands as a constitutional wall against the constant threat of the militarization of constitutional democracy and the subversion of human rights. However, their role is crucial in a more fundamental way, to protect and spread the liberating values of the Constitution, and it is this very modern Constitution with its core values of a modernized welfare state, which will help us shed our present humiliation. Therefore, we need the pen, but without it trying to judicialize our democracy or over-constitutionalize the military. In other words, the judiciary should regulate but not control democracy nor straitjacket the security forces fight against threats to the state. The destiny of this nation lies in the balance between the people, the sword, and the pen. As a first step towards such balance, 3 things are required: immediate free and fair elections, removal of the corrosive deadlock among Supreme Court judges, and the removal of the insecurity of the military leadership of any future political reprisals. The writer is a lawyer. Published in Dawn, May 27, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. ताकि पाकिस्तान के अवाम खुशहाल हो सकें और दुनिया की अक़वाम में अपना जायज़ और बावकार मकाम हासिल कर सकें। दिबाचा आइन 1973। अब तक की अपनी 50 साल की मुख्तसर ज़िंदगी में मैंने अफसोस के साथ देखा है कि इस मुल्क को पहले कम तरक्की याफ्ता मुल्क, फिर एक नाकाम रियासत और अब दुनिया की नज़रों में एक ज़िल्लत आमेज़ रियासत के तौर पर लेबल किया जा रहा है। ज़िल्लत की इस सूरत हाल से इनकार नहीं किया जा सकता जब अफ़गान हुकूमत पाकिस्तानी रियासत और उसके अवाम को सियासी इस्तेहकाम के बारे में लेक्चर देती है, जैसा कि उन्होंने हाल ही में एक सरकारी बयान के ज़रिए किया था। जदीद चीन के उरूज की मरकज़ी नज़रियाती बुनियादों में से एक ये रही है कि वो 1839 और 1949 के दरमियान ज़िल्लत की सदी को कभी ना दोहराने का कौमी अज़्म रखते हैं, जब वो अपनी कौमी कमज़ोरी और अंदरूनी तनाज़ात की वजह से गैर मुल्की ताकतों के ज़ेर तसल्लुत थे। बुनियादी तौर पर हमारी ज़िल्लत अशराफिया की नाकामी है, क्योंकि इस मुल्क की फ़ौजी, सियासी, अदालती, ब्यूरोक्रेटिक, सरमायादाराना, मजहबी और मीडिया अशराफिया ताकत, पैसे और नज़रियाती सकाफ़ती बयानिए के ढांचे को कंट्रोल करके हमारी तकदीर का तयन करती है। ताहम हर मुल्क में एक अशराफिया होती है जो चाहती है कि इक़्तिदार सिर्फ उनके हाथों में मरकूज़ हो, लेकिन वो अब भी नहीं चाहते कि आलमी सतह पर उसे एक ज़िल्लत आमेज़ अशराफिया के तौर पर देखा जाए। हमारी अशराफिया के साथ मसला यह है कि अगरचे वो अपनी हुक्मरानी को बरकरार रखने के काबिल होने में कलील मुद्दती हिकमत अमली का मुजाहिरा करते हैं, लेकिन उनके पास ज़रूरी कौमी इस्लाहात के ज़रिए अपनी अशराफिया की ताकत को बरकरार रखने और बढ़ाने के लिए कोई तज़वीराती एहसास ज़्यादा अज़ाइम नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें आलमी सतह पर एक काबिल एहतराम हुक्मरान अशराफिया के तौर पर समझा जा सकता है। कौमी अहया के हुसूल के लिए मुल्क में जारी कशमकश को समझना ज़रूरी है। कौमी अहया की राह में एक अहम कदम पाकिस्तान में बुनियादी मुआसिर कशमकश को समझना है। ये सियासतदानों के ज़रिए अवाम के दरमियान लड़ाई है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए तलवार/जबरी ताकत और जजों के ज़रिए कलमी/आइनी ताकत है। अवाम 9 मई का गुस्सा एक तारीख़ी अमल की इंतहा थी और इमरान खान इस इजहार का महज एक ज़रिया है। मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों के अवाम की जुरतमंदाना जिदोजहद से 1970 में शुरू होने वाला जमहूरी इनकलाब एक नाजुक मोड़ पर पहुंच रहा है। इस जमहूरी इनकलाब के तवील अलमियाद असरात और इजहार को 3 पेशरफ्तों में देखा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि जनरल अयूब और के बरक्स जनरल ज़िया और मुशर्रफ आइन को मनसूख करने में कामयाब नहीं हो सके।
उन्होंने सिर्फ आइन को मुअत्तल किया। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट भी आइन की अहमियत से खौफजदा और समझती है। दूसरी बात यह है कि कत्ल गारत, नाअहली, जलावतनी और रियासती जबर के बावजूद सियासी अशराफिया और मेहनतकश जिंदा रहते हैं और लड़ते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन भी करते हैं। तीसरी बात, जैसा कि आसिम सज्जाद ने अपनी किताब पाकिस्तान में बालादस्ती के लिए जिदोजहद में वजाहत की है, पीटीआई के तजुर्बे को नौआबादियाती दौर के बाद के बहुत से मुतवाज़ी सियाक और सबाक में पेश किया जा सकता है, जहां मुतवस्सित तबके की उमंगों से सरशार नौजवान और डिजिटल तौर पर मुंसलिक आबादी एक रजती इतिहाद की आवाज़ की बुनियाद बुनती है जो गालिब अशराफिया की इजारादारी को तोड़ने का दावा करता है। पाकिस्तान एक दूसरे मुतवस्सित तबके की तहरीक का सामना कर रहा है, पहले 2007 में वकला की तहरीक के हिस्से के तौर पर और अब इमरान खान की तहरीक के हिस्से के तौर पर। फौजी अदालतों की जानिब से दी जाने वाली शट अपकाला खानदानी सियासत में वापसी से अवाम के जिनको नज़रअंदाज खामोश नहीं किया जा सकता। तलवार, इसके बरक्स ख्वाहिशात के बावजूद इस मुल्क में गुज़िश्ता 16 सालों से कोई माशाअल्लाह बरा रास्त फौजी हुक्मरानी नहीं हुई है। रस्मी आइनी हुक्मरानी का हमारा सबसे तवील दूर इक़्तिदार पर एस्टेब्लिशमेंट की इजारादारी गलबा नहीं के दिन ख़त्म हो चुके हैं। बरा रास्त फौजी कब्जे की कोशिश दोबारा की जा सकती है, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान की तरह इससे एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती का खात्मा हो सकता है। दूसरी जानिब सिविलियन बालादस्ती और गहरी आइनी जमहूरियत के लिबरल ख्वाब को पूरा करने के लिए जिस पायदार अवामी तहरीक और इनकलाबी सियासत की ज़रूरत है वो नज़र नहीं आती। इस तरह हम कुछ सालों तक हमारी आइनी जमहूरियत पर एक मजबूत फौजी असर डालते रहेंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की इजारादारी के बगैर, यानी हाइब्रिड गवर्नेंस के मुख्तलिफ रंगों के बगैर। लेकिन फौजी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का किरदार भी 3 वजूहात की बना पर इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अहम है। पहली बात तो यह है कि फौज के अलावा कोई भी ताकत पाकिस्तानी रियासत के तशद्दुद पर इजारादारी को यकीनी नहीं बना सकती। खाना जंगी और अफरा-तफरी एक कमज़ोर फौज का नतीजा है। दूसरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर कोई ठोस इस्लाहात मुमकिन नहीं है। तीसरी बात यह है कि सिर्फ एक मजबूत और पेशावर मुसल्लह अफवाज ही हमारी सरहदों पर 2 खतरात से हमारी हिफाजत कर सकती हैं, अफगानिस्तान से इस्लामी इंतहा पसंदी की बरामद और इस खत्ते में हिंदुत्व भारत का बढ़ता हुआ गलबा। हमें तलवार की ज़रूरत है, लेकिन इसके बगैर लोगों आइन को ज़ेर करने की कोशिश नहीं की जा रही है। कलम, जज चाहे इसकी ख्वाहिश करें या ना चाहिए, या वो अपने आप को इस काम के लिए मौजू समझते हैं या नहीं, ये आला अदलिया ही है जो अवाम और तलवार दोनों की जानिब से बदसलूकी की रोकथाम में अहम किरदार अदा करेगी। आला अदलिया कमज़ोर मजहबी, समाजी और माशी ग्रोहों के साथ साथ हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी क़ुव्वतों को तहफ़्फ़ुज़ देकर अक्सरियती अवामी सियासत के खिलाफ आइनी ज़ामिन के तौर पर खड़ी है। इसके अलावा ये आइनी जमहूरियत की अस्करियत पसंदी और इंसानी हुकूक की पामाली के मुसलसल खतरे के खिलाफ एक आइनी दीवार के तौर पर खड़ा है। ताहम उनका किरदार ज़्यादा बुनियादी तौर पर अहम है, आइन की आज़ादी की अक़दार की हिफाजत और फैलाव के लिए, और ये बहुत ही जदीद आइन है जिसमें एक जदीद फलाही रियासत की बुनियादी अक़दार हैं जो हमें अपनी मौजूदा ज़िल्लत को दूर करने में मदद मिलेगी। लिहाजा हमें कलम की ज़रूरत है, लेकिन इसके बगैर हम जमहूरियत को अदालती शक्ल देने या फ़ौज को हद से ज़्यादा आइनी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। दूसरे लफ्ज़ों में, अदलिया को जमहूरियत को रेगुलेट करना चाहिए, लेकिन इसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए, और न ही रियासत को दरपेश खतरात के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की लड़ाई को रोकना चाहिए। इस कौम की तकदीर अवाम, तलवार और कलम के दरमियान तवाज़ुन में मुज़मर है। इस तवाज़ुन की जानिब पहले कदम के तौर पर 3 चीज़ों की ज़रूरत है: फौरी तौर पर आज़ाद इना और मुनसिफाना इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट के जजों के दरमियान तबाकुन तातुल का खात्मा, और मुस्तकबिल में किसी भी सियासी इंतकाम के बारे में फौजी क़यादत के अदम तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करना। मज़मून निगार एक वकील हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 27 मई 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.